तो अभी मैं वॉक करके जा रहा हूँ कॉन्सर्ट देखने के लिए, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल मी, ही सेड कि पार्क में कॉन्सर्ट चल रहा है। एंड बेसिकली ये जो कॉन्सर्ट है ये इक्विटी जो वेल्थ गैप है उसको कम करने के लिए, बिकॉज यू नो जो एशियंस हैं, ब्राउन्स हैं, स्पेनिश हैं, यू नो लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ कॉन्सर्ट, सो दे वांट टू ब्रिंग दिस कॉन्सर्ट फॉर फ्री लोगों के लिए जो नॉर्मल लोग हैं। एंड दे टाई विद पार्क्स डिपार्टमेंट एंड you know they do all the events for free. So weekend with this park becomes like a crazy place. कहीं पे concert चल रहा है, कहीं पे you know लोग हमारा अपना अपना you know band, music, तबला लेके आते हैं and then they play in one corner. कहीं पे फुटबॉल चल रहा है और हमारे इंडियन भाई लोग वहाँ पे वो लोग क्रिकेट खेलते हैं। खैर अभी ये शाम का टाइम है तो दे आर ऑलरेडी गॉन। फुटबॉल तो अभी भी चल रहा है पार्क में। एंड देन यू हैव ऑल दिस फूड कार्ट, जो खाने पीने का स्मॉल एरियाज़ है जहाँ पे लोग यू नो दे गेट दिस काइंड ऑफ जो हमारे में ठेला होता है, मंडी होता है, यू नो वी एंजॉय दोस पानी पूरी चाट वगैरह। यहाँ पे दे एंजॉय ऑल दोस चिकन यू नो आइटम्स और बर्गर्स एंड सैंडविचेस, सो दे मेक ऑल दैट स्टफ। सो देखते हैं कॉन्सर्ट में। आई मे नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड मच, बट जितना हो सकता है मैं करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे एक कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। सो आई ट्राई टू शो यू दी इवेंट कि कितने ग्रैंड स्केल में कितना पैसा खर्च करके दे डू इट, एंड इट्स फॉर फ्री, इट्स फॉर नॉर्मल पीपल, लोगों के लिए। एंड दे एडवर्टाइज इन एडवांस एंड देन पीपल कैन कम इन, दे ब्रिंग द चेयर, अपना चादर बिछाते हैं, रात भर बैठ के आराम से देखते हैं। तो यहाँ पे लोग वीकेंड में निकल जाते हैं एंड देन दे जस्ट कम टू पार्क एंड देन दे स्पेंड होल डे पार्क में सनसेट तक। लेट्स सी। जिस तरह से लोग पीछे खेल रहे हैं, यू नो दिस रिमाइंडेड मी, हम लोग जब बचपन में गांव में खेलते थे यू नो वॉलीबॉल, एंड इसी तरह का मिट्टी का वो रहता था, कोई यू नो कच्चा ग्राउंड, काफ़ी मज़े आते थे। यू नो सारे दोस्त शाम को इकट्ठा होते थे एंड देन वी यूज्ड टू प्ले द सेम वे। ये क्या मारा है, इट इज़ सो मच फन, यू नो इट्स लाइक कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, शाम को आओ एंड खेलते रहो अपने दोस्तों के साथ। Alright, Hold on!
Frito, and this is my summer body. Get into it now, because I'm gonna look different in the fall. Let's get free. Thank you for having us. This is Everyday People. We do that. I'm cursing because the sun went down. That's okay, right? That's DJ Moma on the ones and twos, by the way. In case you didn't know, we came to shut this park the down. Wow, okay, wait. I feel like a rapper or something. All of a sudden, like, I feel like, is this how Beyonce feels? But either way, make some noise for my page up from the top to the middle to the bottom. Follow them on Instagram, TikTok, Vine. I don't know what the kids are doing. I'm on Gmail. DJ Moma, we're not done. We got more. I look good. Y'all look better. So tonight is going real well for me. I mean for y'all. दोस्तों कॉन्सर्ट ख़त्म हो चुका है. इट्स वेरी मच टाइम टू गो होम. बट बहुत मज़ा आया. ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि दिस कॉन्सर्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर रेगुलर एवरीडे लोगों के लिए. एंड एवरीवन कैन कम. इट्स फ्री. एंड लुक एट दी वे दे हैव ऑर्गेनाइज इतना ग्रैंड स्केल में कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी कमी छोड़ी. दे हैड सम बिग नेम आर्टिस्ट जो आए थे वहाँ पे गाना गाने के लिए. तो काफ़ी मज़ा आया. एंड देन आई कुड सी दैट एवरीडे पीपल जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दे कैन कम इन एंड दे कैन जस्ट एन्जॉय. एंड एवरीवन वाज एन्जॉइंग. ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम से पीपल वर जस्ट इनसाइड एंड देन दे जस्ट वांट टू गेट आउट एंड हैव अ गुड टाइम. सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो. इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए, बेल आइकॉन में क्लिक भी कीजिए. एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब भी कीजिए. थैंक यू सो मच.